So today I want to talk about a bad habit of mine. It's not really a bad habit, but okay, I'll tell you about it. तो मुझे क्या आदत है, मैं ना सारा टाइम फोटोज़ और वीडियोज़ लेता रहता हूँ. वेन एवर आई सी समथिंग नाइस, वेन एवर आई सी गुड लाइट और एनीथिंग लाइक दैट, आई फील लाइक इट इज़ माई ड्यूटी टू स्टॉप, टेक माई फ़ोन आउट एंड टेक अ पिक्चर और वीडियो ऑफ इट. एंड आई फील लाइक कि मैं ये क्या पॉइंटलेस चीज़ कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग सो मेनी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑन माई फ़ोन दैट आई एम नॉट इवन पोस्टिंग एनी वेयर, नॉट डूइंग एनी थिंग विद दैम. बस लेता जा रहा हूँ, वेस्टिंग माई डेटा स्पेस एंड ऑल दैट. Even people say that, why are you taking all these pictures, you're going to post them nowhere, you're doing nothing with them. And they're partially right, but today when I have become a professional filmmaker and all that, so when I'm on set, I don't have to take the camera out and see what will this frame look like. I have trained myself so much by taking pictures and converting real life scenarios into two-dimensional pictures and videos, that whenever I see a frame I can instantly tell if it's gonna be worth it to take a shot of it or not. And I think that has immensely helped me as a filmmaker. And that's not just limited to filmmaking, and that's not just limited to taking pictures and videos. I feel कि हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो दूसरों को देख के लगता है कि ये तो बड़ी पॉइंटलेस है, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड वाई यू डूइंग दिस, यू कुड बी डूइंग समथिंग बेटर इंस्टेड. और वो सारी चीज़ें सुन के, वो बातें सुन के, वी ऑफन डिस्करेज आवरसेल्व्स टू नॉट डू इट and instead do things that are actually seemingly productive in the moment. I feel nothing really is a waste of time. Everything that you're doing, everything that I am doing is eventually going to come in handy at some stage in our lives. तो जो मूवीज़ तुम देख रहे हो, जो म्यूज़िक तुम सुन रहे हो, जिन दोस्तों से तुम मिल रहे हो, जो सब्जेक्ट्स तुम पढ़ रहे हो, nothing is a waste of time. It might appear like that to be in that moment, क्योंकि इस मोमेंट में तो मेरे को मेरी मूवीज़ कुछ हेल्प नहीं कर रही ना जो मैं देख रहा हूँ. But maybe 5 years later, 10 years later, 30 years later, you are solving a problem or something, and probably watching these movies and understanding these scripts and stories has molded your brain in such a way that you're able to think differently or solve problems differently. तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली हमारे को बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे चेंज कर रही होती हैं, मोल्ड कर रही होती हैं एंड इम्पैक्ट कर रही होती हैं. एंड वी आर जस्ट टू शॉर्ट साइटेड थिंकिंग कि ये मुझे क्या रिटर्न दे रही है, एंड इट्स गिविंग मी नो रिटर्न, सो दैट मीन्स इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट इट्स नॉट. एवरीथिंग दैट यू डू, every small thing that you do that you feel like it's a waste of time or is pointless, it's actually not. There's a point to everything, and I'll quote Steve Jobs here. He said that you can only connect the dots looking backwards. That means that जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, उनकी सेंस ना तुम्हें अभी नहीं बनेगी, but once you look back at your life, every single thing that was happening will start making sense, and you'll be like, oh, so that is why I was doing it that way, and how that pointless, baseless thing helped me today. Doesn't mean that you have to look for pointless things to do, but whatever you're doing which anyone might be calling pointless or a waste of time today does not necessarily need to be a waste of time, because later on in your life it will all become you, and that you will make use of it somehow, somewhere. तो कुछ भी waste नहीं जा रहा है. Everything's gonna come in handy someday.